तो पनीर कच्चा डालना तो पका के डालना। वो मेरे को क्या पूछ रही हो तू? Hi everyone, I am Meenal. Welcome back to my channel and a very warm welcome to another video. Time is 8 AM in the morning. Usually जब मेरी ट्रेनिंग होती है तो मैं 8 बजे मेरा वर्कआउट होता है. So we wake up a bit early. Also थोड़े से breakouts हैं, I don't know why. Anyways, so आज because ट्रेनिंग नहीं है, वी हैव टू डू होम वर्कआउट, तो आज थोड़ा लेट उठे बिकॉज कल सोने में लेट हो गए. बिकॉज मैं कल शाम को सो गई थी तो मुझे रात को नींद नहीं आई. देन द होल साइकिल गॉट डिस्टर्ब. बट एनी विच वेज आई एम अप. द फर्स्ट थिंग टुडे दैट आई एम हैविंग आफ्टर वेकिंग अप इज सम अजवाइन, जिंजर एंड लेमन वार्म वाटर. सो आई एम गोना डू दैट एंड आई एम ऑल्सो सुपर हंग्री. आई डोंट नो वाई बट आई लाइक वोक अप वेरी हंग्री. But then I have to follow the plan, नहीं तो मेरा दिन भर का रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा. तो फर्स्ट थिंग जो मैं कर रही हूँ वो मैं वार्म वाटर ले रही हूँ. उसके बाद देखते हैं. So currently the time is 9 AM in the morning. आज जो हम रोटी बना रहे हैं वो वीट ब्रांड के साथ है. एंड ऑल्सो आई एम मेकिंग राजमा, बट आई एम नॉट मेकिंग लाइक रेगुलर राजमा बिकॉज इट इज़ नॉट विद राइस, इट इज़ विद रोटी. It is with roti, so I'll also share that recipe with you today. So when you're starting with this thing, make sure that you don't add too much of it. For example, अगर आप 1 cup of आटा ले रहे हो तो उसमें सिर्फ 2 to 3 tablespoons of wheat bran add करोगे. Eventually अगर आपको सूट करता है then you can increase the quantum of it, but not in the beginning. So here in 2 cups of atta I have added 4 spoons of wheat bran and that's it, and I'm just gonna knead the dough जैसे आप regular करते हैं, and that's all, and then you can make your chapatis. To this I'm also adding some flax seeds. The time is 9:30 right now and I was really hungry, so I thought कि आटा मैंने कर लिया है, राजमा मैं थोड़ी देर में करती हूँ, पर पहले मैं अपना breakfast कर लेती हूँ. For breakfast today I am having this bowl of 1 full apple, 4 to 5 tablespoons of yogurt and some walnuts. And I usually love to have it. It's like one of my favorite things to have in the morning. So yeah. Also for the best taste, try and make sure that you use the apple that you're using is Fuji apple because I personally love it. The apple altogether is just so sweet and juicy that it just, you don't need to add anything else. Like you don't need any sweetener to this combination. I've never had any other apple with this combination. So if you're trying it for the first time, make sure that you're doing it with Fuji, and I'm 100% sure that you'll love it. To make rajma we'll need rajma. ये मैंने रात भर से सोक करके रखे थे पानी में. These are Kashmiri rajma. We'll need some ginger garlic paste. We'll need 1 onion, green chilies, and we'll need 2 टमाटर की यहाँ पे मैंने प्यूरी कर ली है. Apart from that we'll need मसाला जो मैं जब डालूँगी तो आपको बताती जाऊँगी. Now mine is a healthier version, so I'm just gonna add like 1 and a bit more of ghee and that's it. मसालों में मैं यहाँ पे 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 स्टार अनीस इसमें डाल दूँगी. To this we are gonna add some जीरा or jeera, whatever you want to call it. Also adding some hing to it because it's really good for digestion. So yeah. Onions मैंने यहाँ पे खड़े slice कर लिए हैं. We'll add our onions to this. Now the onions are caramelized. We'll add some ginger garlic paste to it. Also add our tomato puree. मसाले में हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, नमक, राजमा मसाला, and you can also add some धनिया पाउडर. Let it cook. कोई भी डिश को परफेक्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए. सो जब तक ये टमाटो प्यूरी तेल नहीं छोड़ती है तब तक इसको आप सिम पे कुक होने दीजिए. उसके बाद हम इस पर राजमा, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के कुकर को बंद कर देंगे. नाउ दैट द मसाला इज कुक्ड, यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाली है. तेल ज़्यादा छूटता हुआ दिखेगा नहीं क्योंकि घी एकदम कम है. मैंने सोक करके राजमा रखा हुआ था. I'm gonna add that.
Now to this we're gonna add some water. Now ये मैं राइस के साथ नहीं, I am gonna have this with रोटी तो इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ. अगर आप चावल के साथ कर रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं. To this we will add some fresh coriander. बस अब इसको बंद कर देंगे. हाई फ्लेम पे 1 सीटी और सिम पे 7 to 10 minutes. So it's 2 o'clock, it's lunchtime and I'm hungry. Like I'm not that hungry, like I'm not starving. पर मेरा workout भी आज का नहीं हुआ है, so that might be the reason. But I'll be doing my workout in the evening, so I'm not skipping it. 2 बज गए हैं, भूख तो लग रही है. For lunch today I'm having, जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी, I'm having this wheat bran flax seeds roti. I'm having this raita which has tomato and onions in it, and this recipe rajma recipe जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. So that's all for my lunch today. I'll take my lunch and I'll see you in the evening. So it's 5 o'clock right now and I'm very sleepy. I don't know why. Is it because that I did not do my workout today, or is it because that I've not had coffee today, or is it because I've not taken a nap? But I usually don't take a nap. Like रोज़ मैं नहीं सोती हूँ दिन में, कभी जब मुझे लगता है तो. I think it might be because that I've not had coffee. But I'm very sleepy. I'm feeling that I should have coffee, but then I don't want to have coffee. 5:30 बजे मेरे स्नैक्स में है buttermilk and some makhanas or dry fruits or anything like that. I'm also like breaking out. I don't know why, but I am breaking out, and I usually do not break out. Like rarely होता है कि, but I am. I don't know. And I'm very sleepy. और मुझे ये फीलिंग जो होती है ना नींद आने वाली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे मतलब I hate this feeling when I am sleepy. Fun fact about me, even at night, I resist sleep since the very beginning, since I was a kid. जब भी मुझे नींद आती है, I resist my sleep a lot. I don't know, it's a habit. I'm not saying it's a good habit, but it is what it is. अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, still I'll try and be up, and you know I just resist sleeping. I don't know why. It's weird, but it is what it is. So coming back, I don't like, so या तो मैं अभी वर्कआउट में सोच रही हूँ, या तो मैं अभी वर्कआउट कर लेती हूँ या मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ. Let's see. So it's 5:30 right now. I've decided that I'll work out because अगर मैंने अभी टाल दिया या अभी मैं कॉफ़ी पी के बैठ गई तो आज का मेरा वर्कआउट मिस हो जाएगा. And I cannot afford even one day of not working out or eating unhealthy. I just can't do that. If I want to achieve my goal, I have to be consistent. I have to not give up. I really don't want to do it, but I need to do it and I will do it. आज के वर्कआउट में क्या क्या है मैं आपको, today's workout is this. I have to do, this is if you don't know yet, I will tell you how it works. So I am supposed to do 30 dips position mountain climb. Immediately after that I am going to do 16 squats with jump. Then I'm going to do 25 alternate sit-ups. Then I'm going to do 1 minute bear hold. Then 10 push-ups, 30 butt kicks, and then I'm gonna repeat it all over again after 30 seconds of break. So I have to do like 4 sets of these and 3 sets of these. That's how it works. I'll see you after the workout. So it's almost 6. Got done with my workout. I won't say that I gave my 100% because मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था करने का, but I just wanted to get it done just because I don't want to break the chain. So I did whatever was told. Yep. And I'm glad that I did it. कल रिग्रेट करने से अच्छा है आज उस पर वर्क करो, rather than you know कल से बैठ के बोलो ओ मिस हो गया, वन डे मिस हो गया, लॉस हो गया, पूरा साइकिल चेंज हो गया. Do it or don't crave about it. So after my workout, I'm having 2 plums. Like we are sharing. We are sharing plum. Milo.
What are you eating? Pump. Pump. Also, I'm a bit worried about the breaking out part. Usually it doesn't happen to me. Maybe I'm not having enough water. Maybe that is the same. Maybe. So I have to work on that now. तो अभी 7:45 हो रहे हैं. Almost वैसे तो dinner time हो रहा है, but for me to be up, I need coffee, because if it was only me and Karan, we would have had our dinner and we would have slept. But we also have 2 kids. So I will need this coffee. So I'm having this coffee. I've also added sugar to it, like normal sugar, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. And I'm also having a little bit of diet चूड़ा और थोड़ा सा चना चोर ग्राम, like very little of it. पनीर सैलेड में क्या क्या डालता है? पनीर सैलेड में क्या क्या डालता है? जो फ्रिज खोलो, जो दिखेगा डाल देना. ऐसा गटर 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 कर देने का और खा लेने का. टेंशन तेल थोड़ी बना दिए. अरे वो सैलेड तो वही होता है ना, पनीर और कच्ची सब्जी. तो सब्जी तो फ्रिज में ही होती है ना. 10 प्रकार की सब्जियां होगी, टमाटर, ये वो फलाना ढिमकाना, सब मिक्स करके डाल के खा लेना. खा लोगे तुम फिर? मैं अब मेरे को ऑप्शन है क्या उसमें कोई? तो पनीर कच्चा डालना, तो पका के डालना. वो मेरे को क्या पूछ रही हो? वो जो भी बना रही हो ऐसा बनाना जो इंसान खाता है, ठीक है ना? तो तुम तो खा ही लोगे ना. जब तुमने मेरा बनाया हुआ कच्चा चिकन खा लिया, तो तुम मेरी बनाई हुई कच्ची सब्जी नहीं खाओगे? Watch it, bro. Tension alert. FYI, मुझे जब खाना बनाना नहीं आता तो मैंने एक बार करण को बोला कि मैं तुम्हें चिकन बना के खिलाऊंगी. कैसा था वो चिकन? अच्छा. वो कच्चा. पर वो प्यार था कि उसने खा लिया. हाँ, वो तो ऑप्शन नहीं है ना उसमें कुछ. नहीं तो बोल देता नहीं ये कच्चा है, तो उधर में ही मेरा कच्चा फ्राई हो जाता. The time is 9:30. Again dinner में थोड़ा लेट हो गया, but well we are having paneer salad. It is 70 grams of paneer and some sautéed vegetables, and that's all for dinner today. So it's 10, almost 15-20 minutes after my dinner. Now I will take walk for 15 to 20 minutes. I do that every day. From today also I am starting my calcium and hair fall medicine, which is prescribed by my doctor. Let me put this out very straightforward. If you're taking any kind of multivitamins, let it be any kind of multivitamins or any sort of medicine, do not take it without consulting your doctor. I never take any sort of medicine, let it be multivitamins or anything, without consulting my doctor. And I had went to her a few days back and she had told me to take calcium and medicine for my hair fall. So just वेरी क्लियर कट स्टेटमेंट, डू नॉट टेक एनी मल्टीवाइटामिन्स खुद के सोचने पे, किसी और के बोलने पे. जब तक आपको आपका डॉक्टर नहीं बोल रहा है वो चीज़ लेने के लिए, प्लीज़ डोंट टेक दैट. उनने मुझे पहले भी प्रिस्क्राइब की थी बट मैं नहीं ले पाई. देयर इज समथिंग बिटवीन मी एंड मेडिसिन दैट आई जस्ट डोंट लाइक टू टेक दैम. आई पर्सनली फील दैट जितना मैं अपनी बॉडी को मेडिसिन से दूर रखूँ उतना बेटर है. लेट इट बी मल्टीवाइटामिन्स. आई जस्ट वांट टू टेक एवरीथिंग ऑर्गेनिक. कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वेजिटेबल्स खाइए, पानी पीजिए एंड स्टफ लाइक दैट. बट देन जो चीज़ें ज़रूरी है तो है. एंड ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं डॉक्टर, तो उनको तो मुझसे बेटर पता है. एंड आई ट्रस्ट हर 100-200% इन फैक्ट. सो या, एंडिंग माई डे विद दिस एंड विल टेक अ वॉक फॉर 15 to 20 minutes एंड 11:30 तक we will doze off. And I'll see you tomorrow with another video, with another health tip and with another recipe. Till then, stay healthy and stay